अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड वेलकम बैक टू मोटिवेशन, जहाँ पे आपकी सक्सेस जर्नी हमारा मिशन है। और आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। आज हम बात करेंगे हाउ सेल्फ कंट्रोल इक्वल्स टू सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हाउ दैट डज नॉट इक्वल टू डिसिप्लिन। लास्ट टाइम कब था जंक फूड खाने आप बैठे थे, आपको पता है यूर ओवरवेट, आपको पता है यूर नॉट ईटिंग क्लीन, फिर भी आज आपने दोपहर में बर्गर खाया, रात को दोस्तों के साथ निकले, फिर वापस आपने जंक फूड खाया। अगर हाँ, तो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, डिसिप्लिन की बात नहीं है। लोग डिसिप्लिन को सेल्फ कंट्रोल के साथ मिक्स कर देते हैं। सेल्फ कंट्रोल इज अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, इट्स नॉट अबाउट डिसिप्लिन। सो इसको आज हम थोड़ा सा और ज्यादा डीपली डिस्कस करते हैं। सेल्फ कंट्रोल इक्वल्स टू self-respect and it does not equal to discipline, and discipline itself क्या है, इसके ऊपर तो पूरी वीडियो बन सकती है। So let's move on and get into the first topic, why people struggle with self-control। लोग, इंसान, हम जैसे, मेरे जैसे भी, मैं भी, सेल्फ कंट्रोल के साथ हम क्यों स्ट्रगल करते हैं, goes back to the society conditioning। क्योंकि बचपन में, कॉलेज में, हर चीज में जो कंडीशनिंग की जाती है, इट्स ऑलवेज अबाउट चेसिंग द डोपामिन। YOLO, you only live once. अरे, I don't want to do this, I can't do this right now. YOLO, I'll go ahead and eat a whole pizza right now. YOLO, you only live once. That YOLO moment, you only live once. Yes, you only live once, so live better, live clean, live healthy, right? So that moment, बहुत छोटा सा example है ये, but that moment where you give in to an urge, something your inside is telling you not to do। आपको अंदर से आवाज आ रही है, I don't want to do this, ये नहीं करना चाहिए, मुझे अभी ये जंक फूड नहीं खाना चाहिए, मगर अंदर से वो आवाज आई, YOLO, you only live once, कर लो। That urge, every time you give in to that urge, you are chipping away at your self-respect, because आप अपने आप को रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं कि अंदर से आपकी बॉडी और आपको माइंड एक चीज बोल रहा है, नहीं करना है। You cannot say no. You want that instant dopamine. And again, it's not your fault. It's the way society is conditioned. But understanding how this conditioning needs to be broken so that we start respecting ourselves. Once we start respecting ourselves, we'll start saying no to those urges that come up that goes against ourselves. YOLO, will stop saying no to those YOLO moments. YOLO, yes, YOLO. I only live one life. I'm not giving into that unhealthy habit. I'm going to continue following a healthy habit. Let's move on to point number 2. Point number 2 basically था कि हम बात करेंगे how self-discipline, self-control equals to self-respect, not discipline. बहुत words jumble हो रहे हैं दिमाग के अंदर, बहुत सारी information है। मगर पॉइंट नंबर 2 हमने ऑलरेडी वीडियो की शुरू में काइंडा लिंक इन करके बात करी, तो वीडियो को ड्रैग ना करते हुए गो ऑन टू पॉइंट नंबर 3, व्हिच इज माइक्रो मोमेंट्स दैट बिल्ड मैक्रो कैरेक्टर। छोटे 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 टाइनी डिसीजन, यू नो, वी मेंटोवेशन स्टेप बाय स्टेप मोमेंट्स बिल्ड द बिगर पिक्चर, लीड अप टू द बिगर पिक्चर। Saying no to things that don't align with yourself। थके में वर्कआउट पे नहीं जाना है, go do the workout, respect yourself enough so that you'll have the discipline. Respect yourself enough so that you can build the discipline to show up at workouts all the time. And एक point आएगा, जैसे मेरी लाइफ में आया हुआ है, कि you'll go do a killer workout, next day you're not sore at all. Why? Because your muscles are used to it, muscle memory built in हो गया है, discipline built हो गया है muscle memory में, through self-respect. So you must self-control to be self-respectful, to build the discipline that's needed in life to excel. Your friends are chilling tonight. You have been called to chill. Saying no to that chilling moment when you had planned you're going to be reading a book. Dopamine hit. Friends are chilling. Oh, close that book. Let me go out with my friends. Respect yourself. Respect yourself. You had made up your mind that aaj I'm going to read a book. No matter what external thing happened that'll give you that dopamine hit, respect yourself enough so that you'll have the discipline to say no to partying and focus on building yourself. That is actual
self-respect. Point number 4 पे आते हैं. Self-control creates external respect. Once you start respecting yourself and start saying no to things that don't align with you, जिन लोगों को आप ना बोल रहे होंगे ना, वो भी कुछ चेंज हुआ है, कुछ डिफरेंट है इस बंदे में. ये पहले आता था चिल मारने, आजकल चिल मारने नहीं आता. ये कर क्या रहा है, क्यों नहीं मिल रहा हमसे, डरा. अब वो लोग इंक्वायरी करेंगे, तो क्या कर रहा था, तो कल रात को मिलने नहीं आया हमसे, हैंग आउट नहीं किया, व्हाट वर यू डूइंग. मैं बुक पढ़ा था. बुक पढ़ा था? क्या बुक पढ़ा था? मैं बुक पढ़ा था और उसके लिए बिजनेस की. हैं? अच्छा, क्यों? मेरा बिजनेस को स्केल कर रहा हूँ, उसके लिए मैं नॉलेज गेन कर रहा हूँ बुक्स के थ्रू एंड सीइंग हाउ पीपल डिड इट एंड ट्राइंग टू अप्लाई. अच्छा, तू इसलिए नहीं आया था? हाँ. वाओ मैन, नाइस, कीप इट अप ब्रो. Respect being built in your peer circles because you are working on yourself, because you are giving yourself that respect, and then it'll externalize. Let's get on to the next point. How to strengthen your self-controlled muscle. छोटे छोटी चीजों से, छोटे छोटे steps से. Having that morning routine we talked about, doing the introspection we talked about at night. ये छोटे छोटे steps से self-respect बढ़ेगी. Create environments where temptation is reduced. अगर आपके अराउंड सराउंडिंग एक इन्वायरमेंट में आप हैं जहाँ पे आपको नॉन स्टॉप केओस मिलता है, नॉन स्टॉप डोपामीन का वो है, नॉन स्टॉप इनपुट्स हैं, एंड यू आर अनेबल टू फोकस ऑन बिल्डिंग योरसेल्फ, get out of that environment. What are you doing in that environment? It's not working for you. Respect yourself enough to not be in environments that pull you down, and respect yourself enough to get into environments and be engaged in environments that lift you up in life. Now, अगर आप कॉलेज में हैं, this is very important for you. कॉलेज से निकल चुके हैं, very important for you. If you are in high school, if you are in middle school, watching this, ignore all of this. It doesn't apply to you. Enjoy being a kid right now. If you're a senior in high school, start paying attention to these small things, because your time is right around the corner, where if you start implementing these things at the age of 18, when you reach my age at the age of 38, you'll be 10 years ahead of me. So take that the way you want, because it'll help you. Last thing, पे अब हम वीडियो को एंड करते हैं. The promises you make to yourself, keep them. Not keeping the promises जो आप अपने आप से करते हैं, आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे. You're not giving yourself that respect. Tying back into the little friendly scenario we created, you wanted to read a book tonight, you have fitted it in your mind that you're going to read a book. Friends call you 30 minutes before. Your choice. What are you going to do here next time when a situation like this arises? Are you going to chase the dopamine? Well, then continue. Or are you going to respect yourself? Finally start respecting yourself and holding yourself accountable to the promises you make to yourself. If you cannot keep a promise you made to yourself, how the hell are you going to be able to keep a promise with anyone? And how the hell is anyone, or how should anyone trust you to keep a promise when you can't keep a promise to yourself? Respect yourself. Start keeping your promises to yourself. Then you'll see how everyone will start respecting you. And when you make a promise to someone, bro, that promise becomes etched into existence once you start respecting yourself. See you, Pakistan.